Good morning, everyone. In today's science class, we will study about audible and inaudible sound, noise and music, noise pollution, sources of noise pollution, and measures to reduce the noise pollution. Okay, so let's start with audible and inaudible sound. We know in the last class we studied the term frequency, and it is a property of sound. Frequency means number of oscillations in 1 second, number of vibrations in 1 second. 1 second में जितनी vibrations हुई, जितनी oscillations हैं, that is called the frequency and its unit is hertz. तो जो sound produced होता है, that has a particular frequency, and a particular frequency range is audible to human ear. Like here you can see from this figure, frequency range sound की अगर 20 hertz से लेकर 20,000 hertz तक है, तो that is audible to human ear. Audible to human ear means human can hear this range of frequency. The sound of this frequency range is audible to human ear. So 20 hertz to 20,000 hertz is a frequency range. But if the frequency is less than 20 hertz, so that sound is known as infrasound, and that is inaudible to human ear. Human इस frequency को नहीं सुन सकता, उस sound को नहीं सुन सकता if that sound has frequency below 20 hertz, and that frequency is audible to elephants and some other animals. Okay, and the frequency above 20,000 hertz or over 20,000 hertz, that sound is known as ultrasound. That is also inaudible to human ear, but the bats can hear this ultrasound. Okay, so audible range क्या है human ear के लिए? किस कौन सी range है frequency की? 20 hertz to 20,000 hertz. Now the next topic is noise and music. Music में क्या होता है? The sound जिसमें हमें pleasant feel हो, तो that sound is music. इसमें vibrations जो है वो regular रहेंगे. Regular means in a particular pattern. But अगर vibrations जो है वो irregular हो, means बहुत सारे sound जो है वो mix हो गए and they are not forming a particular pattern, तो उससे जो vibrations हैं वो irregular हो गई and that sound is unpleasant. And unpleasant sound is known as noise. Okay, so pleasant sound having regular vibration is music, and unpleasant sound having irregular vibration is known as noise. And when this unwanted sound is present in the environment, it causes noise pollution. So presence of excessive means जैसे ज्यादा लाउड स्पीकर्स लगा दिए जाएं या बाहर कोई डीजे प्ले हो रहा है, ट्रेन्स का साउंड. Okay, so these unwanted sounds in the environment causes noise pollution in the environment. And what are its sources? TV, televisions at high volume, ट्रेन का शोर, जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, आसपास के जो घर होते हैं ट्रेन के जहाँ ट्रैक होता है, तो वहां पर जो ट्रेन का जो नॉइज है, दैट आल्सो कॉजेज नॉइज पोल्यूशन. दैट इज अनवांटेड साउंड फॉर दोज पीपल लिविंग नियर द ट्रैक्स. एंड डेजर्ट कूलर्स, इनका भी शोर होता है, तो दिस इज आल्सो a source of noise pollution. Okay, now what are the harms of noise pollution? It may cause health related problems. Health related problem जैसे कि lack of sleep, नींद नहीं आती. Hypertension means high blood pressure होता है. Anxiety, stress हो जाता है. Temporary or permanent impairment of hearing means deafness. ठीक है, it also causes deafness, मतलब परमानेंट जो है आपका हियरिंग लॉस हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन से. So these are the harms of noise pollution. Now what can we do? What measures can be taken to reduce noise pollution?
What can we do? Silencing device must be installed in aircraft engine, transport vehicles and industrial machines. मशीन्स में या व्हीकल्स में या जो इंजन्स होते हैं उनमें साइलेंसिंग डिवाइसेस का यूज किया जाए ताकि नॉइज पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकें. एंड इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मशीन्स का शोर होता है, दैट शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल. रेजिडेंशियल मीन जहां लोग रहते हैं, जहां का रेजिडेंस है. तो दी इंडस्ट्रीज जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास नहीं होनी चाहिए. इट शुड सेट अप अवे फ्रॉम दोज एरियाज. यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड. मीन्स अननेसेसरी जो है वो हॉर्न्स जो है वो नहीं ब्लो करने चाहिए. टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स. वॉल्यूम कम रखो. एंड प्लांट मोर ट्रीज. By planting more trees, the sound gets absorbed by the plants and it helps to reduce noise pollution. Okay, so that's all for today's class and your sound chapter gets over. Thank you class and have a nice day.